Education for life. What does it mean? What is the life? What is the structure, function, properties, and dimensions of the life? This should be our education. Because we need only life. We human beings have great importance for the life. If we are earth or we are mountain, then we do not need this kind of life, what we have it. We are human beings, we need to know the science of life and how life is able to manifest itself in all dimensions of creation. How life is transformed in the form of light, sound, in the form of atom molecules, virus, bacteria, plants, animals. If you practice Kriyayoga, then we will know about this. Just keep on practicing. Do not stop until we realize how to create anything and how to preserve it, how to make change. You see, each and every moment virus is working. If there is no virus, there is no life. Virus is maintaining life. How virus is maintaining life? Because something is all the time disappearing. Something is going to change in a state non-functional. In our body, many structures will be non-functional. Then viruses are removing them. Viruses are converting them into different material. Because viruses, mostly they are messenger RNA. They are part of the neurons. They are part of the neurons and they convert everything into the neurons. That is important. And if you convert muscles into neurons, very difficult to live. Because neurons, when it is exposed to air, to sunshine, you touch it, you get a lot of pain. If neurons are covered, here the neurons, it is covered with the skin, with the muscles. You try to expose the neurons, very difficult to live. Therefore, these viruses, they are transforming all the things which are going to be non-functional, all the decayed material or broken material, they are converted into very sensitive structure called neurons. And we need neurons in the body. Because sometimes neurons are cut, something damaged, we need neurons. So how to get neurons? The viruses are very important for that. But important thing is that after viruses, there is the secondary activity, bacteria. If bacterial activity starts, then many times we need antibiotics. Or you can raise your immunity, you can solve it. You can solve problem of the bacteria by raising vitality through Kriyayoga or by selecting appropriate antibiotics, medicines. Then if the Shagiri and many masters realize up to that status, they are solving all problems through the Kriyayoga. They are not using any kind of medicines. Kriyayoga is such very important, and if it is ready to spread, then there should be very big opposition by opposite factor of Kriyayoga.
Paramahansa Yogananda was spreading Kriyayoga in West. Opposite factor called bad news. They formulate, they imagine that whatever Yogananda is doing is not right for the society, is not good. Therefore, this opposition started in the life of Yogananda, very big opposition. All the time there is opposition. If nothing is there, they keep on telling you, oh, you are collecting big fund. When you are telling, no, my all funds are for the public, they are telling you, oh, we don't believe in this. Then he has to prove it. Now we are going to see the opposition factor in the life of Paramahansa Yogananda. And you must realize everybody can face opposition. But if you are facing opposition, you can overcome it through the Kriyayoga meditation. We should not do any violence, any kind of destructions to anyone. Practice Kriyayoga meditation sincerely, all opposition slowly disappears. Then perfect, all kind of support starts increasing. But opposition they must, and it will be. That's very important. See, in the Kriyayoga movement in India, whatever I am doing, now support is starting from the bureaucrats, from everybody here and there. Not much financial support, but they stop opposing. They start realizing this is very important. After how many years? Therefore, I request all of you, when you are going to see opposition in the life of Yogananda, this is one example. But how to face it? Only practice Kriyayoga sincerely, automatically all opposition will disappear. Practicing Kriyayoga means you are going to increase light of truth, light of non-violence, light of protection, light of preservation, light of peace and joy. Keep on increasing it, opposition will cease to zero. अच्छी तरह से याद रखिए, सबके जीवन में अपोजिशन होता है. जो जितना बड़ा काम लेगा उतना बड़ा अपोजिशन. The higher aim of the life, you will find bigger opposition. If you have taken responsibility to serve all creations, you will have big opposition, the greatest opposition. But you have to take this aim of life to serve all, because opposition will not damage you. Opposition will not do anything. Remember it. But keep on increasing your responsibilities more and more. Become more and more responsible. Pray to the God, give me more work. Give me more responsibility. Just keep on praying and keep on serving and have no fear. अच्छी तरह से याद रखिए, जितना बड़ा काम उतना बड़ा पोजीशन. लेकिन आप क्रिया योग करते जाइए, अपोजिशन अपने आप गायब हो जाता है. जैसे सूरज के उगने पर अंधेरा और रात्रि गायब हो जाती है. रात्रि वहीं होती है, लेकिन सूरज के उगते ही और रात्रि भाग जाती है, छिप जाती है. ऐसे क्रिया करते जाइए, अपोजिशन एक दिन अपने आप खत्म हो जाता है. तो क्रिया योग करना बंद मत करिए कभी भी. कितनी विपत्ति क्यों ना आए, क्रिया योग कभी भी मत छोड़िए. कितना भी कष्ट क्यों ना पड़े, इसको कभी मत छोड़िए. आप देखिए अब एक मूवी में कैसे अपोजिशन शुरू होता है परमहंस योगानंद की लाइफ में.
इसी मूवी में योगानंद के बहुत जो अपोजिट वाले थे उनका भी दिया गया है, उनका उसके जिक्र हम ज्यादा नहीं करेंगे। इतना भर याद रखिए, कोई भी आदत हो, अल्कोहलिक हो या फिर स्मोकर हो, ओवर ईटर हो या बहुत गुस्सा आते हो, कई प्रकार की आदतों के बंधन में जकड़ गए हो, ऐसा लगता है कि अब कोई आशा नहीं है, आप क्रिया का अभ्यास करते जाइए, सब आदतें समाप्त हो जाती है। अल्कोहलिज्म समाप्त होगा, स्मोकिंग खत्म होगी, कोई भी आदत होगी, सही प्रकार की आदतें अपने आप हट जाएंगी। इस हमको कभी घबराना नहीं चाहिए। आप क्रिया का अभ्यास करते जाइए, वह सारी आदतें खत्म हो जाएगी जिन आदतों की वजह से हम बीमार होते हैं, चिंता होती है, डरते हैं, कुछ भी होता है, अकर्मठ होते हैं, आलसी हो जाते हैं। ये सही प्रकार की आदतें समाप्त हो जाती है अपने आप। सिर्फ आप क्रिया का अभ्यास करने को सोचिए बस। What is said here, any kind of habit which is not good for your health, for your peace, for joy, just practice Kriya, automatically all those habits will disappear. All the time you will feel peace and joy and happiness, good vitality, good health. Even worst thing in the life, if you cannot remove, do not worry. Hold Kriyayoga, you will find all the worst things will disappear. This is 100% guarantee. Do not worry about anything, just start practicing it. For example, if you have bony disorder, osteoporosis, you have muscular disorder or digestive disorder, any problem, just practice Kriya sincerely. One day all problems will disappear. Practically just see it will happen. Practicing Kriya means, suppose that you are sitting, you do not have joy in sitting, you have fear. Try to face the fear, fear will go. Sit and practice. You want to observe how to practice in lying position? Techniques are there. Just play it and lie down and practice. If you are awake again, you want to lie down further, play it and lie down. There are many practices. Sit and practice. You do not have love to sit and practice, play again, you will develop love. You want to sit 10 hours, do not worry. Play it again and again, again and again. You will reach to 10 hours practice. Therefore, try to create a habit of practice. That's all. When you create a habit of practice, all habits will disappear, which will reduce vitality, which will reduce immunity. All those habits will disappear. This is very important. Connect yourself with the practice. Suppose that you slept a lot, you are not able to practice, do not worry. When you are awake, practice. If you slept, after awake, do not worry. I have slept, I should not sleep, I have to practice. Don't say this. When you are awake, start practicing. You start practicing when you are working at that time also. And when you intend to sleep, nothing in your hand. I slept. When you are awake, do not worry. Sometimes we don't get sleep. Do not worry that we are not getting sleep. Just practice Kriya, you are awake. I request all of you, today we are going to practice also in lying position. If Swami is having, he will put guided meditation, otherwise I will give. Now come to the further, see what happens. कितनी भी आदतें हो, ज़्यादा सोने की, ज़्यादा खाने की, शराब पीने की, स्मोकिंग की, गुस्सा होने की,
गाली गलौज करने की, जलस करने की, राग द्वेष करने की सारी आदतें खत्म हो जाती हैं। आप सिर्फ अभ्यास करने को सोचिए बस। ओके स्वामी जी।
One practice will give Swami Bhavanam. If he is having good lying practice, lying recharging, the lying meditation on breath, on Bhumad, on holy vibration, then I will give you sitting practice. During practice, it is better to take a good space so that we should not create any inconvenience to others. एक अच्छी जगह ले लीजिए और लेट करके अभ्यास करिए। स्वयं भावानंद आपको ऑडियो देंगे। आप ब्लैंकेट ले लीजिए, keep blanket around you. Be comfortable. ऐसा लेटिए कि किसी कोई डिस्टर्ब ना करे। Try to lie down, so many space is there. Nobody should disturb anyone. We are going to turn light off or very dim. Remove this brighter light on me.
आइए आप सबको बढ़िया सा 20 मिनट लेट करके अभ्यास करा दे। 2-3-4 घंटे सोने के बराबर होगा। तो रात में कम समय में नींद खुल जाएगी तो करेंगे क्या? तो सिर से पैर की उंगली तक अनुभव करिए और कहते रहिए कि है क्या, अमर तत्व की अनुभूति है ये। आई वुड लाइक टू गिव यू 15-20 मिनट्स लाइंग practice so that you must enjoy suspended awake stage. Try to enter into semi-deep sleep. Then in night you will find that in few hours you will complete your sleep. The remaining times try to enjoy the presence of immortality. Therefore we are going to practice a lying position after 2 minutes. 2 मिनट के बाद हम लेट करके 15-20 मिनट का अभ्यास करेंगे। आंखें हम बंद कर ली। लेट अस क्लोज आवर आईज। हाथ बगल में फैलाएं, स्प्रेड आर्म्स इन लैटरल पोजीशन। मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट ओपन पाम अल्टरनेटली। हाथ ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथ को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स। प्लेस बोथ पाम ऑन द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हेड। दोनों हथेली को सिर के पीछे रखें। फील हेड एंड स्पाइन मोर एंड मोर। सिर और रीढ़ में और एकाग्रता बढ़ाएं। दाहिने और बाएं पैर को हम कड़ा और ढीला करके अनुभव करें। ट्राई टू फील राइट एंड लेफ्ट लेग बाय इंक्रीजिंग टेंशन रिलैक्सेशन। टेंस रिलैक्स राइट एंड लेफ्ट लेग एंड फील देयर प्रेजेंस। Presence of both legs we realize is presence of immortal consciousness in this unique form. इसी तरह से हम दाहिनी पीठ बाईं पीठ दोनों पीठ को कड़ा ढीला करके अनुभव करें। टेंस रिलैक्स बैक, राइट साइड लेफ्ट साइड ऑल्टरनेटली। Right side, left side, back we experience represents is immortal consciousness. फिर हाथ को ऊपर उठाएं, रेज आर्म्स अप। मुट्ठी बंद करें, खोलें, क्लेंच फिस्ट ओपन पाम ऑल्टरनेटली। हाथ को ऊपर नीचे करें, मूव आर्म्स अप एंड डाउन। हाथ को मोड़ें और फैलाएं, फोल्ड आर्म्स, ओपन आर्म्स ऑल्टरनेटली। जो कुछ हम अनुभव कर रहे हैं यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है। वेरियस चेंजेस वी रियलाइज विद इन हेड टू टोज इज प्रेजेंस ऑफ इमॉर्टल कॉन्शियसनेस। अब हम अपने स्थान पर लेटेंगे। नाउ वी विल लाई डाउन ऑन द बैक। लेटते समय जो परिवर्तन प्रकट हो, जो कुछ चेंजेस लगे सिर से पैर की अंगुली तक, इन परिवर्तनों में एकाग्रता बढ़ाएं। इन परिवर्तनों को अमर तरंगों के नाम से स्वीकार करें। इन द प्रोसेस ऑफ लाइंग डाउन, व्हेन वी आर इन लाइंग पोजीशन, ट्राई टू फील presence of it is various changes within. This lying position is bringing realization of various changes. Accept these changes, various dimensions of immortal consciousness. जो भी हम अनुभव कर रहे हैं, सिर से पैर की अंगुली तक जो अनुभूति कर रहे हैं, हम एकाग्रता बढ़ाएं इसमें। ये अनुभूतियाँ, ये अमरता की अनुभूति है। अब दाहिने पंजे और बाएं पंजे को हम कड़ा ढीला करके अनुभव करें। नाउ टेंस रिलैक्स राइट फुट लेफ्ट फुट ऑल्टरनेटली। एकाग्रता बढ़ाएं दाहिने और बाएं पंजे का, दाहिनी पिंडली बाईं पिंडली का।
tense, relax calf muscles right and left. Tense, relax thighs right and left. दाहिनी और बाईं जांघ कड़ा ढीला करके अनुभव करें। ये कड़ा ढीला क्यों कर रहे हैं? जिससे अमरता की अनुभूति अनेक तरह से कर सके। What is the purpose of tensing, relaxing various parts in order to realize immortal consciousness in many dimensions? दाहिने और बाएं पैर को कड़ा ढीला करते हुए दाहिनी और बाईं पीठ को भी हम कड़ा ढीला करें, हिलाएं और डुलाएं। When we are tensing, relaxing the various parts of the right and left leg at the same time, try to tense, relax the right and left side of back by creating different movements in the structure of back. Try to experience immortal consciousness in many dimensions. दाहिनी और बाईं पीठ को कड़ा ढीला करते जाए। कड़ा ढीला करते हुए जो अनुभूति कर रहे हैं, यह अनुभूति अमरता की अनुभूति है, इस तरह से समझें। इसीलिए हम कड़ा ढीला कर रहे हैं। अब इस तरह से पीठ के बल लेटे हुए हम धीरे धीरे अंगड़ाई लें कि पैर, हाथ, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर, सब जगह कुछ न कुछ ऐसा परिवर्तन हो जो अच्छा लगे। In the lying position, try to create some movement in the various structure by tensing relaxation, leg and arms and back, abdomen and chest, neck, face and head, with one aim, to experience immortal vibration more and more. Try your level best how to create various movement to enjoy emerging. Various immortal consciousness are emerging. We are realizing their presence as immortal vibration. Now by turning towards right and left side of the body, try to create new kinds of changes in all over head to toes. कभी दाहिने करवट, कभी बाएं करवट, इस तरह से करवट को अदल बदल करके नित्य नए परिवर्तनों को प्रकट करके इसे दोहराएं कि यह सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि अमरता की अनुभूति और नए तरह से कर सके। इसी समय श्वास अनुभव करें। दिस टाइम फील प्रेजेंस ऑफ ब्रेथ। दिस मोमेंट फील हेड टू टोज। आप खूब अच्छी तरह से इस तरह से अंगड़ाई ले कि अच्छा लगे। Try to stretch all parts to enjoy various changes. After practicing 3 times, then relax all parts to maximum. 3 बार इस तरह से अंगड़ाई लेकर के सब भाग को एकदम ढीला कर दें। Legs apart, पैरों के बीच में दूरी। Arms fully relaxed, हाथ एकदम ढीला। सिर से पैर की अंगुली तक। ये पूरा अस्तित्व पृथ्वी पर इस प्रकार है जैसे पूरी तरह निश्चिंत हो। पृथ्वी सुरक्षित है, पूरे ब्रह्मांड में तैर रही है। परब्रह्म की अमर सुरक्षा की शक्ति पूरे पृथ्वी को सुरक्षित कर दिया है, पूरे आसमान में तैर रही है। शरीर भी उसी के साथ तैर रही है। ऊपर आसमान अनंत, पृथ्वी बीच में, पृथ्वी के नीचे आसमान अनंत, पृथ्वी के चारों तरफ आसमान अनंत। इस तरह अनंत आसमान का अनुभव करते हुए श्वास अनुभव करें।
Feel head to toes. Immortal consciousness is relaxing on the earth. Earth is in completely safe mode, floating in the sky. Ever when below earth there is infinite height of a sky. There is no boundary of a sky. Earth is fully protected and preserved. With this protection, head to toe is also have full protection. Enjoy such great protection and observe breath. Feel presence of breath. पूरी तरह से सुरक्षा है, हर चीज सुरक्षित है। इस सुरक्षा के महान शक्ति के अंदर हम विराजमान हैं और श्वास का निरीक्षण कर रहे हैं, श्वास अनुभव कर रहे हैं। श्वास का अंदर प्रवेश, बाहर निकलना अनुभव करते हुए हम सजगता बढ़ा रहे हैं। उसी समय आसमान का विशाल रूप आसमान की बाउंड्री नहीं, इतने बड़े आसमान में सब सुरक्षित, सौर्य मंडल, आकाश गंगा, तारा मंडल, पृथ्वी पर मनोजात जीव जंतु, वनस्पतियां, पहाड़, नदी, समुद्र, सभी पूर्णतया सुरक्षित। इसी में श्वास हम गिनते रहेंगे। श्वास अंदर आई, सजग हो जाए, बाहर निकली, अंदर आई एक, बाहर निकली दो। ऑब्जर्व ब्रेथ, इनहेलेशन, आउटहेलेशन, inhalation, exhalation, feel it. Never miss any breath. At the same time, visualize a sky without boundary. एक भी श्वास भूलेंगे नहीं। उसी समय आसमान का विशाल रूप बंद आंखों से कल्पना शक्ति से देखे। आसमान की बाउंड्री नहीं, चारों तरफ कोई बाउंड्री नहीं। एक भी श्वास भूलेंगे नहीं हम। श्वास न भूलें, इसके प्रमाण के लिए हम गिनेंगे। गिनने में पूरी तरह सजग हैं, इसलिए उल्टी दिशा में गिनेंगे। सांस अंदर आई 100, बाहर निकली 99, फिर अंदर आई 98, बाहर निकली 97। इस तरह से उल्टी गिनती के साथ श्वास को गिनते हुए श्वास के प्रति सजगता बढ़ाते जाए। In order to expand awareness of breath, try to count breath. Inhalation 100, exhalation 99, next inhalation 98, next exhalation 97. Like this, have reverse counting. Along with this, visualize infinite size of sky. Try to observe complete protection. The whole cosmos is very well protected with the omniscient, with the Vishnu consciousness of God, with the power of ahimsa.
When we are observing breath, try to welcome all energy waves, light and sound, solid and liquid and gaseous, energy in the form of plant kingdom, animal kingdom, human being. Appreciate all. अच्छी तरह से हम स्वागत करें, स्वागत करें अपनी सजगता का, सच के प्रति सजग है हम। प्रतिपल जो भी अनुभूति कर रहे हैं, इस अनुभूति की महिमा अनंत और असीम है। In this way, we will try more and more to appreciate all creations are various manifestations of one consciousness immortal. इस तरह से हम समता स्थापित कर ले। ब्रह्मांड की प्रत्येक रचनाएं अमर तत्व सभी रचनाओं के रूप में प्रकट हो रहा है। सभी रचनाओं का गुण एक ही है, अमरता। सभी का महत्व बराबर है। Importance of all creation is the same. There is no comparison. Immortal consciousness we realize in many forms. Now we do not have any kind of binding towards anything. We are free from binding. If you are trying to move our leg, we should be free to move. No consciousness will try to prevent if we are ready to move both legs. हम पैरों को अगर हिलाना चाहते हैं तो याद रखिए कि हम स्वतंत्र हैं। अब कोई भी संस्कार, कोई भी शक्ति और रोक नहीं पाएगी। अब हम पैरों को धीरे धीरे हिला करके अपने स्वतंत्रता का परिचय दें। Now try to move your both legs and try to remember your freedom. No habit, no prejudices can prevent it. पैर के साथ साथ हाथ को हिलाएं। इस तरह से स्वीकार करें कि हाथ को हिलाने में भी कोई बाधा नहीं डाल सकता। कोई भी आदत, कोई भी विचार, हम फ्री हैं, अब किसी बंधन में नहीं हैं, न किसी आदत के, न संस्कार के। We have no binding with any habit or with any things. We are free to move arms, tense relax arms and legs. इसी के साथ साथ पीठ को हम हिलाएं डुलाएंगे इस भावना के साथ कि हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हम किसी भी आदत के बंधन में नहीं हैं कि अब जो अनुभव हो रहा है उसी में लगे रहेंगे। हम जब चाहें इस अनुभूति से अलग होने में समर्थ हैं। Whenever we think we are out of this perception, what we feel in lying position, we are demonstrating now. We are able to move legs and arms and back. We are increasing length of inhalation, exhalation. अंदर जाने वाली सांस को थोड़ा लंबी कर रहे हैं, निकलने वाली सांस को लंबी कर रहे हैं। पीठ को हिला डुला करके और एकाग्रता बढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे लंबी और सांस लेकर के धीरे धीरे अंगड़ाई ले रहे हैं। Try to have comfortable stretching with the inhalation. अब धीरे धीरे श्वास निकालने की लंबाई बढ़ा करके सब ढीला भी कर रहे हैं।
increasing length of exhalation and relaxing all parts. अब दाहिने और बाएं करवट भी ले रहे हैं. Now we are turning towards right and left side with our own will. Try to become victorious. No habit, no anything can prevent this doing. अच्छी तरह से हम स्वतंत्रता की अनुभूति करें हैं. कोई भी विचार और भावना और आदत में हम बंधेंगे नहीं. हम दाहिने और बाएं करवट भी स्वतंत्र रूप में ले रहे हैं. We are free, we are having right and left side. Then again we are having thought of getting sitting position. अब हम विचार बना रहे कि अब हम बैठेंगे हम. Now with the long inhalation stretch all parts, now we will sit. अब लंबी श्वास के साथ अंगड़ाई ले और हम बैठेंगे. देखिए, इस चीज से याद रखिए कि जो भी हम अनुभव करते हैं, जो अनुभूतियां नहीं अच्छी लगती है, वह अनुभूतियां भी अमर तत्व की उपस्थिति है. जो अनुभूतियां बहुत अच्छी लगती, वह भी अमर तत्व की अनुभूति है. हमें किसी अनुभूति से ना आसक्ति हो और ना द्वेष हो, ये होना चाहिए. Any changes what we feel is very comfortable, that is also immortal consciousness. Some changes which we do not like, that is also immortal consciousness. Other than immortality, nothing exists. By repeated effort, we can train our mind to live this lifestyle. Then we will find our understanding is great. Nobody can create misunderstanding in our life. जब ये अभ्यास करेंगे कि हम सच को पकड़ेंगे, हम नहीं, आसमान, हवा, एनर्जी, अणुपरमाणु कोई भी तो नहीं मरता है. ये अलग अलग नहीं मरते हैं, मिलते हैं तब भी नहीं मरते हैं. हाइड्रोजन अमर, ऑक्सीजन अमर, दोनों मिलकर पानी हुआ, वो भी अमर है. तो सिर से पैर की उंगली तक अमरता का अनुभूति है. तो किसी अनुभूति को हम दुख कहें, सुख कहें, ये ठीक नहीं है. आप कहते दुख होता है तो क्या करें हम? इस तरह से शरीर को उठाएं, बैठाएं, चलाएं कि जो परिवर्तन हो दुख की तरह न लगे. इसी के साथ साथ आइए हम क्रिया योग ध्यान में अपनी भक्ति के प्रति नमन करें. विद दिस मैसेज लेट अस बाउ डाउन टू आवर डिवोशन. इन क्रिया का मेडिटेशन वी है. अब हम बैठेंगे. नाउ वी विल सिट एंड ओपन आईज. अब हम बैठेंगे और आंखें खोलेंगे. देखिएगा, धीरे 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 हम उसी दिशा में जा रहे हैं जिससे राष्ट्र सभी कष्टों से मुक्त हो जाएगा. Slowly, slowly we are moving in the same direction. That nation will get rid of all problems. आज यहीं तक हम लोग आज जा सकते हैं. सुबह 8 बजे फिर यहाँ पर आएंगे. This is for today. Tomorrow we will come again at 8.
Now we are ready to start our journey to reach ultimate point where we experience state of yoga. State of yoga means absence of distance between self and God. There are two journeys, outward longer and inner journey shorter. Inner journey is royal, having less problem, lesser difficulties. Outer journey is having more problems. How to start it? Feel head to toes. Around this, visualize sky, within sky, earth is floating, head to toes is on the earth, safe. Visualize complete cosmos, and within cosmos, presence of visible self, head to toes. अब हम जीवन यात्रा के लिए तैयार हों। जीवन यात्रा में हम उस जगह पर पहुंचे जहां योग की अवस्था है, दूरी की शून्यता, हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य। दो प्रकार की यात्राएं हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य यात्रा कठिन और आंतरिक यात्रा सरल। आंतरिक यात्रा को राजयोग कहते हैं, इनर जर्नी। बाह्य यात्रा को दुनियादारी, मैटेरियलिस्टिक लाइफ। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप का निरीक्षण करें। स्वरूप के चारों तरफ अनंत ब्रह्मांड। ब्रह्मांड का विशाल रूप और उसके बीच में पृथ्वी सुरक्षित। पृथ्वी पर स्वरूप का दृश्य रूप।
सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाती हुई पूरे ब्रह्मांड का बंद आंखों से निरीक्षण करें। Feel visible presence of self head to toes more and more. With the closed eyes, visualize cosmos. Shape and size of a sky, infinite. Within, earth is floating on this earth. Visible self is present, head to toes. श्वास का निरीक्षण करें। ऑब्जर्व ब्रेथ। श्वास का निरीक्षण करते हुए सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाएं। सभी प्रकार के परिवर्तनों को स्वीकार करें। Watching breath, feel each and every part of head to toes. Have deeper and deeper concentration on head to toes. At the same time, watch breath. सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप का निरीक्षण करते जाएं, अनुभव करते जाएं और उसी समय श्वास का निरीक्षण करें। जो कुछ अनुभूति हो रही है, इसी अनुभूति में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। अंतर यात्रा की गति, तीव्रता बढ़ती जाएगी। श्वास का निरीक्षण करते हुए सिर से पैर की अंगुली तक एक एक अंग का विधिवत निरीक्षण करें। Keep on watching breath and feel each and every part of head to toes more and more. Keep on watching breath
have deeper and deeper concentration on each and every part of head to toes. We should have only one thought, idea, and concept that head to toes, all changes within head to toes, and breath all constitute a highway towards ultimate point where we will experience oneness with God. Keep on watching breath and keep on having more and more concentration on head to toes. Appreciate all changes within. एक एक परिवर्तन जो अनुभव कर रहे हैं ये बाधा रहित पथ है उस स्थान पर ले जाने के लिए जहां पहुंचने पर एक ही समय में सब कुछ प्राप्त हो जाता है ज्ञान शक्ति शांति जीवन अमरता each and every change within head to toes is pathway holy pathway leading us towards ultimate point. The moment we reach ultimate point, we realize all dreams and desires of incarnations get fulfilled easily. Keep on watching breath. At the same time, feel head to toes more and more.
जब हम इस भावना को, विचार और धारणा को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं कि सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप वह पथ है, उच्चतम मार्ग है, इसमें होने वाले परिवर्तनों में एकाग्रता बढ़ाने पर इस मार्ग पर चलने की गति बढ़ती है और जो जीवन का लक्ष्य है उस तरफ हम तेजी से बढ़ने लगते हैं। जैसे ही यह स्वीकार करते हैं वैसे ही एकाग्रता बढ़ाने लगते हैं। उसी समय श्वास का निरीक्षण करने लगते हैं। आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य के चतुर्दिक आभा मंडल में भी एकाग्रता बढ़ाएं। आंख बंद रखते हुए भ्रूमध्य के चतुर्दिक आभा मंडल में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। श्वास का निरीक्षण करते रहे। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इसमें होने वाले समस्त परिवर्तनों में और अच्छी तरह एकाग्र हो। इस अभ्यास से अंतर यात्रा की गति, एक्सेलरेशन, त्वरण आसानी से बढ़ने लगता है। While watching breath, keep eyes closed. With the closed eyes, have deep awareness of your spiritual aura. At the same time, pay attention to each and every part of head to toes. Appreciate all changes. Observe breath as our devotion and concentration on breath and spiritual aura on head to toes and changes within increases. Speed, acceleration towards ultimate point increases quickly. We should have only one thought, idea, and concept, that head to toes, various parts within head to toes, all changes within head to toes, and breath and spiritual aura all constitute a highway
towards ultimate point where we realize state of yoga, spaceless, timeless existence, oneness with God. All the time we are on highway, all the time we are on path. Have awareness on breath, on spiritual aura, on head to toes, on changes within. यही एकाग्रता हम हर समय बनाए रखें। जब हम बोलते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, किसी को दिखाने का कार्य करते हैं, चलते फिरते हैं, हाथों से काम करते हैं, स्वाद और गंध की अनुभूति करते हैं, कल्पना करते हैं, सोचते विचारते हैं, प्रतिपल श्वास में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। भ्रूमध्य के चतुर्दिक आभा मंडल में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक पूरे अस्तित्व में और एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक इसका उपयोग सेवा करने में, पृथ्वी की सेवा, नदी, पहाड़, तालाब, झील, समुद्र, पेड़ पौधे, जीव जंतु, मानव, सभी की सेवा करने में जो परिवर्तन प्रकट हो, इसमें एकाग्रता बढ़ाते जाएं। कभी कभी कई घंटे बैठ करके ही सेवा करनी पड़ती है। 8-8 घंटे, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे, उस समय भी श्वास में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में एकाग्रता बढ़ाते जाएं। इसमें होने वाले परिवर्तनों में, आभा मंडल में, तो हम पाएंगे कि हमारी यात्रा बहुत अच्छी हो रही है। प्रतिपल और अधिक ज्ञान और शांति और जीवन शक्ति, सर्वशक्तिमान तत्व की अनुभूति, परमानंद की अनुभूति बढ़ती जा रही है। Many times we sit many hours in front of computer, in front of any tool to complete work. 8 hours, 10 hours, 12 hours, 18 hours. During that period also,
Keep on watching breath. Keep on concentrating on head to toes. Appreciate all changes within. Concentration on a spiritual aura. More and more. Then we will experience each moment more power, knowledge, peace, joy, patience. This is the sign symptom of good journey. Now let us close our ears with the help of meditation stand. Dedicate 10 minutes. Deep awareness, concentration on sound waves. Keeping ears closed. Concentration on breath, on spiritual aura, on head to toes, on changes within. Now we have faster journey than before. We will reach the ultimate point easily in less span of time. अब हम 10 मिनट तक कान बंद करके सूक्ष्म ध्वनि तरंगों में एकाग्रता बढ़ाएं। श्वास में, आध्यात्मिक आभा मंडल में, सिर से पैर की अंगुली तक स्वरूप में, इसमें होने वाला परिवर्तन में। अब अंतर यात्रा और अच्छी तरह हो रही है।
aim of a human being to have continuous, unceasing journey towards the ultimate point where we realize oneness with God. Oneness with God means absence of ignorance, oneness with all knowledge, power, peace, joy, immortality, and omnipresence existence. मानव जीवन का एकमात्र लक्ष्य अंतर यात्रा को पूरा करना, अनुभव करने के लिए कि हमारे परमात्मा के बीच दूरी शून्य है, अनुभव करने के लिए कि अज्ञानता, बीमारियां, मृत्यु ये सब माया है, ये स्वप्न है, इनका अस्तित्व नहीं है। हाथ पैर को कड़ा ढीला करें, टेंस रिलैक्स legs and arms, पीठ, पेट, सीना, गला, चेहरा, सिर कड़ा ढीला करें, टेंस रिलैक्स बैक, एब्डोमेन, चेस्ट, नेक, फेस, हेड, दोनों हथेली से एक एक अंग को पकड़ करके अनुभव करें। With the help of palm of the both arms, try to touch, press each and every organ and feel it. Head, face, neck, arms, chest, abdomen, back, both legs, सिर, चेहरा, गला, हाथ, सीना, पेट, पीठ, दोनों पैर। गहरी श्वास के साथ अंगड़ाई ले और 2 बार में श्वास निकाल करके सब ढीला कर दे। इस तरह 3 बार करें। With the long inhalation, stretch all parts. Then with the double breathing, double exhalation, relax all parts. Repeat 3 times. क्रियायोग ध्यान के प्रति अपनी भक्ति को नमन करें। Let us bow down to our devotion in Kriyayoga meditation. Now we will sit and open eyes. This is the practice given. Sometimes when we do recharging very nice, then you can have direct this practice. In this there is no much movement. जब कभी रिचार्जिंग अच्छी हो तो उसके बाद सीधा ये अभ्यास कर सकते हैं।
Now observe your breath. Let your body remain in any position. Lying, sitting. Observe your breath. What is the various structure of breath? It is the breath which is present in the form of a head, face, neck, arms, back, chest, abdomen, both legs. A head to toes is presence of breath. Something is happening within head to toes. That is activity of breath. Expansion, contraction of thoracic area, abdominal area. The moment we reach ultimate point of truth, then we realize breath exists in the form of head to toes, in the form of various changes within head to toes. The moment we realize breath exists in the form of head to toes and in the form of various changes within head to toes, then we will realize breath exists in the form of cosmos. Breath exists in the form of all creations. Sun, moon, stars, galaxies, sky, air, plant kingdom, animal kingdom,
while observing presence of various activities within head to toes, we realize that light, a spark of light, various dimensions of light which exist everywhere, is presence of breath. Try to understand with the help of logic. We cannot understand. By practicing again and again, presence of breath is presence of all activities within head to toes, is presence of all creations. The moment we accept it, then we realize we have eternal awakening. Then we are awake. Just practice it. How to practice it? Accept it. How to accept it? Do not try to think about various ideas, thought, concept we are hearing in the form of sentences, sound waves. Do not think about this, but accept it is a breath which has become all. Breath has become a sky, air, fire, water, solid, liquid, gases. Breath has become all creations. When we observe presence of all creations, pay highest respect and honor to all, then we are practicing oneness with the breath.
we should have liking for everything. If we realize sitting position and try to convert this sitting position in lying position, if a lying position, convert this lying position into sitting position, but remain unaffected. From sitting to lying, whatever happening, remain unaffected. Do not practice likes, dislikes. Just practice to remain unaffected. If you are sitting, then lie down, but remain internally the same. If you are lying down, then sit. From lying to sitting, we are making this change, but internally remain unchanged. What does it mean? If you do not feel any if you remain even-minded all the time, same, if you like all conditions, same, lying, sitting, in the lying, if you are having right side, left side, on the back, on the stomach, try to observe this in any condition. We practice to love all conditions equally. Never compare. Sitting is better, or lying is better, or right side better, or left side better, on the back or on the stomach. Try to accept all various things we observe. For example, from lying, if you are trying to achieve, to get sitting position, if you are not having desire to practice this, then like this condition also. We have no desire, like this condition also. If you have great desire to transform this position from lying to sitting, sitting to lying, accept this also. Accept all desires what we have.
If you don't have any desire, accept the same, this condition also. Have desires or have no desires, accept both equally. If there is a day or night, morning or evening, accept all equally. If there is a summer, winter, accept both equally. We are accepting everything. Let us do experiment again. If you are sitting, do the experiment from sitting to changing lying position, or if you are lying, change from lying to sitting position. If your body is still no movement, try to move it. If it is moving, try to keep it still, absence of movement. Accept all conditions. Never practice, I do not like this, I do not like that. Do not practice this. Practice this, that we like all things, all stages, all perceptions, all changes. If you are awake, feel head and spine, within head and spine ABC, practice ascension of cool current with the whisper A followed by warm current whisper E. Ascension is whisper A and cool current. Opposite of ascension, returning back, E sound and warm current. When you reach at point C, stay there. When you reach point A, do not stay there.
Now we are creating a thought that we are going to maintain sitting position few minutes. All positions, they are dream in nature. We have no effect. We remain unaffected, but we have decided to adopt sitting position. Now we have sitting position. Place both palms on the posterior surface of head of his spine below. Again practice ascension of cold current with the whisper sound. Reach at sea, stay there for a while, maximum 5 seconds. Then return from C, B to A with the warm current and with the continuous whisper E. Moment we arrive at the A, do not stay there. Again, ascension as you did before. Whatever you understand, just follow the practice and continue same practice, placing arms down. Continue same practice by placing both palm on the respective side of head and face, keeping chin parallel to the ground. But we are practicing all the time ascension with the whisper then descension with the whisper E. Practice same ascension, descension activity within divine cave, closing ears.
Place both palm at the junction of right and left palm at the junction of respective side of thigh and abdomen, palm facing upward. Practice same ascension and descension process of breath within divine cave. Try to remain awake, remain even-minded in all conditions. If you are able to practice or not doesn't matter. Remain unaffected. We are fully awake, remain unaffected in all conditions. If you are able to practice ascension and descension current, and if you are not able to practice in both conditions, remain even-minded. दिव्य गुफा में हम श्वास की अनुभूति ठंडे करंट, गर्म करंट के साथ कर रहे हैं या नहीं, प्रत्येक परिस्थिति में अनअफेक्टेड रहे, किस प्रकार की कैसा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, अनअफेक्टेड रहिए। आज हम पूरी तरह से अवेक हैं, सजग हैं, सभी प्रकार की एक्टिविटीज में हम अवेक है कि हम अनअफेक्टेड हैं, हम प्रभावित नहीं हैं। हम लेटे हैं या बैठे हैं या करवट लिए हैं या नहीं लिए हैं, हम खड़े हैं या चल रहे हैं या कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम अवेक इस
विचार से हैं कि हम अनअफेक्टेड हैं, पूरी तरह से हम जागृत हैं, सजग हैं, हम अनअफेक्टेड हैं। अब हम धीरे धीरे उठने के लिए तैयारी करें। हम उठने के लिए तैयारी कर रहे हैं या नहीं, अनअफेक्टेड रहे, लेकिन हम उठने के लिए तैयारी कर लिए हैं, कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उठना चाह रहे हैं, नहीं उठ पा रहे हैं। इन सब कंडीशन से हम अनअफेक्टेड रहे, अप्रभावित रहे। एकदम डिम लाइट है या लाइट तेज है, दोनों दिशाओं में हम अप्रभावित रहे। देयर इज ए डिम लाइट और ब्राइट लाइट, बट रिमेन अनअफेक्टेड। इस तरह से अवेक हो, रिमेन अवेक। इफ यू आर इन डिम लाइट or in darkness or in bright light, remain unaffected. Now we have decided to stress all parts and practice from lying to sitting, sitting to standing position, from standing to walking position at our own spot. अब हम अगर लेटे हैं तो बैठेंगे, बैठे हैं तो खड़े होंगे, खड़े हैं तो हम अंगड़ाई लेंगे और अपने स्थान पर हम चलेंगे। इस तरह से हम प्रत्येक कंडीशन से हम अप्रभावित रहे, लेकिन करते जाए। Remain unaffected from all conditions, but start working. Lying to sitting, sitting to standing, standing to walking, and stretching all parts. Like recharging number 1. Recharging number 1. आज हम पूरी तरह से सजग हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हम अप्रभावित हैं इससे। Today we are remain unaffected in all conditions. We are able to practice or not, doesn't matter. Remain unaffected. All the time. Now we are ready to be around bright light. Somebody will turn light on and try to remain within bright light. अब हम तेज प्रकाश में रहेंगे। तेज प्रकाश में है या अंधेरे में, अनअफेक्टेड रहे। इस तरह से हम आज अवेक हैं। Today we are awake all the time, that we remain unaffected. Now we are going to see today that successfully
We try to practice that we are unaffected from everything, but we are doing also. We are able to do or not. It doesn't matter. हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, प्रत्येक की स्थिति में हम अप्रभावित हैं। अब हम अपने स्थान पर बैठेंगे, दोनों हथेली को सिर चेहरे के दाहिनी तरफ रखेंगे। Now try to get sitting position. Place both palm, right palm on the right side, left palm on the left side of head and face, chin parallel to the ground. दाहिनी हथेली को सिर चेहरे के दाहिनी तरफ, बाईं हथेली को सिर चेहरे के बाईं तरफ, chin parallel to the ground, ठुड्डी को जमीन के समानांतर करो। अब बैठी ही स्थिति में हम अंगड़ाई ले। In sitting position, stretch all parts, tense, relax, right leg, left leg, right back, left back, take abdominal content towards back, spread thoracic cage laterally, सीने को हम दाहिने और बाईं तरफ फैलाएं, पेट को पीठी की तरफ ले चले, पैर के नीचे से सिर तक सब में एकाग्र हो जाए। फिर हम हाथ ढीला करें। ना रिलैक्स आर्म्स। Now we decided to return to our holy banyan tree place where we stay every day. Keep tomorrow class morning from 8 a.m. onward. कल सुबह की क्लास 8 बजे से हम लोग ज्वाइन करेंगे और अभी हम तैयारी करेंगे चलने के लिए। जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर हम अब चलेंगे। But if you want to see Mahabharata, I can open, I can explain. What you want? जी क्या? महाभारत अब डंडा उंडा लिए है? डंडा से खेलेंगे मुक्का से? ओके, मेरे माता खैर आ रही है। ओपन। We are going to start from very beginning. Main highlights, then I will explain. Today we practice, we remain unaffected in all conditions. See how good peace we have. Try to teach no one. Try to say nothing to anyone.
remain unaffected. Try to absorb very hard, loud scolding, remain unaffected. And try to scold someone, also remain unaffected in all conditions. Now we are going to see Mahabharata episode, main things. When we accept the holy science that Parabram is all in all, in Parabram there exists all, no space, no distance between past, present and future. Try to accept it, become scientist and follow. ऊपर नीचे क्या रहेगा भाई? जिसमें क्या कहाँ रहने ऊपर नीचे? Try to listen clearly. Teaching of Mahatma Baba is supreme. He has explained ultimate truth. Parabram alone exists. And you are Parabram, I am Parabram. Everybody is that. In Parabram, past, present, future exists all the time, everywhere. I mean, no space, no distance between past, present and future. Then you have to accept Shantanu exists in your form. And there is no distance between Shantanu and Hastinapur. The Hastina exists in your form. All activities, what happens, Shantanu, whatever is doing, all activities, whatever you see, remain unaffected. And see what happens. Let us celebrate 1 hour that I have told Mera mother to play Mahabharata, but she is not playing. Remain unaffected. She denied to play. Okay? कहानी तरह शुरू होती है। Okay, turn light up. एक दिन महाराज शांतनु गंगा तट पर शिकार खेल रहे थे। Turn light up.
brother or sister, husband or wife, you will have illusion. What illusion we are going to experience in between both? If you accept head to toes is presence of Param, your wife or your husband or your children or your brother, sister, parents, anyone or no one is presence of Param. By accepting this alone, we realize absence of all kind of fear, stress, tension, worries. But you must realize, after seeing this, you have to practice one thing. Head to toe, what you feel is presence of all in all. It is presence of Shantanu. It is presence of Ganga. It is presence of Hastinapur. It is presence of purest of pure. Other than this, we have nothing. Head to toes is purest of pure Ganga. Head to toes is presence of Param Brahm in the dimension of Shantanu. Within head to toes, it is presence of kingdom and head to toes, myself is a kingdom and king both, is Shantanu, Ganga both, all in all. Then I have no any other question. Now question disappeared. Answer disappeared. We have only one answer, head to toes is all in all. When you practice head to toes is all in all, then you will realize we can work day and night, have no tiredness. Then vitality within head to toes will increase up to infinite. Then vitality in the external area will be maximum. And there will not be poverty in the nation. There will not be lack of fund. There will not be any problem. Just feel head to toes is all in all. सिर से पैर की उंगली तक जो अनुभव कर रहे हैं, होली साइंस के अनुसार ये परब्रह्म की उपस्थिति है। परब्रह्म में अतीत, वर्तमान, भविष्य, परब्रह्म में सब कुछ है। तो हेड टू टोज यही शांतनु, यही गंगा, इसके अंदर सारे परिवर्तन, ये पवित्र तत्व, यही हस्तिनापुर, यही सब कुछ है। और जो कुछ है ये पावन और पवित्र है। पवित्रता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। और इस तरह से हम सिर से पैर की उंगली तक इसे एक्सेप्ट करें। इसी तरह से हम सब कुछ, सभी को एक्सेप्ट करें, तो आप देखेंगे स्ट्रेस, टेंशन, वरीज डिसअपियर्ड, खत्म हो गई। ओपन आइज एंड ट्राई टू थिंक अबाउट इट, व्हाट आई एम सेइंग। Do practice. In the deep sleep, what you feel? In deep sleep, you don't feel that you are male or female, you are brother or sister, you are husband or wife, you are parents or children, what is your nationality. You just, everything disappears. There is no question, there is no answer. What you feel? Great peace in deep sleep. In the awake, try to live like this. From this moment till next moment, try to accept this head to toes is all in all.
It is presence of Jesus Christ as well as it is presence of Lord Krishna. But whatever we feel, except is purest of pure. Except purity, nothing exists. Except this. सिर से पैर की उंगली तक ये जो अनुभव कर रहे हैं, ये जीसस क्राइस्ट की उपस्थिति, ये लॉर्ड कृष्णा की, चाहे जो एक्सेप्ट करे, पति ये जरूर स्वीकार करे कि पवित्र तत्व है, पवित्रता के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। देखिए हम लोग का लक्ष्य क्या है, हर प्रकार के चिंता से मुक्त हो जाए, आपस में झगड़े न हो। What is our aim? We should be away from all worries and tension. There should not be fight among us. If there is no fight among us, how it is possible? Only in this condition, head to toe is all in all. Among us, have no complaint, have no question. Then what you will do? You will have a lot of vitality. You cannot stop. You have to work automatically. What kind of work? So many work. You will start any work. When we read so many things, chapter this, chapter that, each and everything have different meaning, we have a lot of stress. You see, Guru disciple means one. Parents, children means one. Brother, sister means one. All means one. When you feel all means one, then practice within head to toes, it is all in all. You will find emotions become zero. There is no emotion at all. अगर इसको हम स्वीकार कर लें कि सिर से पैर की उंगली तक ये सब कुछ ही, पूरा अस्तित्व यही ऑल इन ऑल है, और पूरी तरह से इसी का अनुभूति में निमग्न रहे, तो अपने आप सब वही कार्य होगा जिससे इकोनॉमी अंदर की बढ़ेगी, जिसको वाइटलिटी कहते हैं, इकोनॉमी बाहर की बढ़ेगी, जिसको राष्ट्र की संपदा कहते हैं। ये है इम्पोर्टेंट। एक एग्जाम्पल है, गहरी नींद क्यों अच्छी लगती है? गहरी नींद में न कोई प्रश्न है न कोई उत्तर है। गहरी नींद को परम आनंद ही आनंद हम कहते हैं, इसके अलावा कुछ कहते नहीं। जब गहरी नींद परम आनंद ही आनंद है, कोई प्रश्न नहीं, इसमें कोई उत्तर नहीं, कोई राष्ट्रीयता नहीं, कोई जेंडर नहीं, कुछ भी नहीं। तो जब हम दीक्षा वाली क्रिया करते हैं तो करते करते यही स्थिति आ जाती है। When you become expert of initiation steps, then you attain the same status all the time. Try to see in the case of Paramahansa Yogananda, when he was meditating at Garpar Road, his consciousness was translated into a consciousness of captain in the army, and there was fight. A bullet came from the enemy, he pierced chest. He was bleeding and falling down and he was dying. Then immediately he found, no, he was meditating, he was not dying. Then he started awake and moving. Then he said, no, I am not dying, I am awake, I am alive. Again he entered into the same consciousness.
that he is the captain and he received a bullet and he bleeding, again dying. Then he asked question, what is true? I am dying or I am alive? What answer he got? Both are illusion. You are light. You are light means you are knowledge. The knowledge is dying or alive, there is no question. Just you are light, you are peace, you are joy, you are power, you are immortal. This is what I gave practice first time in Toronto in 94. Nobody was understanding, but everybody liked. When I say close your eyes, feel head to toes, you are all in all. But nobody was following what is this all in all. But they slept very nice in the class. Then I became popular because I was giving sleep to everybody. After that, when I realized now they enjoy sleep, then I never gave any practice that they should sleep. I request all of you, from today onwards, practice up to the next tomorrow, that you are all in all, everybody is all in all. Do not have any questions, see what happens. I observe what happens. And each and everything what you feel within is purest of pure. Do not discuss any question to anyone, do not ask anything to anyone, but just accept everything is presence of Param Brahma, that's all. And see what happens. Immediately you will find tension disappeared, stress disappeared, sleep is gone, dream is gone, everything is gone. Greatest problem is that we have so many education. What Mahatma Gandhi said, that is very important. I like it very much. I think you will be also like. A degree is really a burden. I regret having become a barrister. And if you believe me, I am not even conscious of being one. Because of my experience, I would rather save others from that burden. It is message of Mahatma Gandhi. Then what he was feeling at that time? He was no barrister, nothing. All degrees burden. He didn't want anybody should have that burden. That the same practice, head to toes is all in all. He never wanted that British should leave India. He wanted that British should practice principle of Christ consciousness and be here. That British should practice Indian heritage and be here. He never gave thought that go away from here. When they were not living that principle, then Mahatma Gandhi said, now quit India. महात्मा गांधी कभी भी ये नहीं कहे अंग्रेजों को कि यहाँ से जाइए. उनको बहुत प्यार करते थे, कहते थे आप यहीं रहिए, लेकिन जीसस क्राइस्ट के सिद्धांत में रहिए. जब मोसेस ने कहा वैसे रहिए, जैसे बुद्धा ने कहा वैसे रहिए. अगर नहीं रहते हैं तो जाइए यहां से. अब एक एक्सपेरिमेंट हम चाहते हैं करना. आज चूंकि पहला दिन था, टुडे द फर्स्ट डे, आई वांट द एक्सपेरिमेंट. टुडे 1:30-35. Moment you reach your home, it will be around 3. Then try to sleep 1 or 2
Let us see, do experiment what happens, observe it. Goal should be tensionless life, fearless life. हमारा लक्ष्य है कि तनाव मुक्त और डर भय से मुक्त जीवन. Then we should, I think, walk together, not alone. If somebody is sleeping, leave them here. I will bring them in the car. Who is sleeping here? White one. Tomorrow morning 8 we are going to have the class. 3 we will come here. Tomorrow I will give you the complete glimpse of Holy Science, all 4 topics. कल हम चारों टॉपिक का ग्लिम्स देंगे. But today just walk together, everybody. देखिए जो कार्यक्रम है इसको जितना अधिकतम सब्सक्राइब होगा उतना लोग इससे जुड़ेंगे. जूम सेशन, लाइव सेशन से जितना लोग जुड़ेंगे उतना तेज परिवर्तन होगा. और परिवर्तन बहुत आवश्यक है क्योंकि लड़ाइयाँ हो रही हैं अनेक देशों के बीच में. हर जगह छोड़िए, अपने अंदर ही लड़ाई हो रही है, परिवार में हो रही है, समाज में हो रही है. सभी लड़ाई झगड़ों को बंद करने के लिए बहुत आवश्यक है ये कार्यक्रम अधिकतम सब्सक्राइब किए जाए. जूम सेशन एक साथ लोग बैठे, आगे पीछे नहीं. जूम सेशन, लाइव सेशन में प्रयास हो एक साथ बैठे. लाइव सेशन में प्रतिदिन तो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, इसे जूम सेशन सैटरडे संडे लिया गया है क्योंकि उसमें एक साथ बैठे. एक साथ बैठने का इफेक्ट अच्छा होता है. ये चीज को फैलाने में मदद मिलेगी. जब तक ये फैलेगा नहीं, कष्ट नहीं जाएंगे. ये जो क्रिया का मिशन चलता है प्रयागराज में, पावन गंगा के तट पर, संगम त्रिवेणी के आभा मंडल में, महात्मा गांधी मार्ग पर, जहां महात्मा बाबा आ चुके हैं, इसको अधिकतम लोग सब्सक्राइब करें. और जब जूम हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बैठे. It is very important to understand all fight and war are clashes on this planet. It has to be removed. And these sessions, whatever is happening at the bank of Holy Ganga, in the premises of Sangam Trivedi, at both sides of Mahatma Gandhi Marg, this place was blessed by Mahatma Babaji, 11 तारीख 3 agree. If this message, this thing is subscribed more and more in the Zoom session, Saturday, Sunday, we should join together. When we join together, we have big impact. If you want war should stop, then spread this message. That's all.